Okay, Suraj, please introduce yourself. Sir, my name is Surya Prakash. I belong to a bordering village named Rajpura, which comes under district Samba. And I have done my schooling from my village itself. After that, I have done my graduation in Bachelor in Sciences from Government Degree College Katua. I am a 2018 batch pass out. After that, I have been preparing for the UPSC as well as JKPSC both. And in my hobbies, I like to play badminton and sometimes do jogging as well. You completed your bachelor's in 2018, and it is Yes. close to 4 years now. Why haven't you gotten through the civil services examination? Sir, firstly, sir, I started my preparation in 2019, so the guidance was not there since the financial stability is less in my family, so I didn't go for the coaching as such. So I have prepared by self-study. So by understanding the nitty-gritty, so it has taken me some time now, but I have prepared myself fully, and right now I'm sitting in front of you. Why would you choose civil services as an option for your career? I decided to pursue civil service after the year of my graduation. Uh, it is because of the majorly the diverse job profile that it provides. It gives an immense opportunity to grow individually, and further, it is also a great platform to serve the society in the coming years of a person. And lastly, it provides and financial security to the family as well. Your name is Suraj. That would Yes, mean sir. sun, or we can call it light. Can you tell me Yes. how much time does it take for the light to reach Earth? Sir, I'm not quite sure, but if you know, I can make a guess. Yeah, please. Sir, I think it is around 8 seconds. 8 seconds? Sorry, sir, I'm not sure, but it is around 8 something. Okay. Would you be aware of the time it takes for the light to reach from moon to the earth? Sorry, sir, I'm not Okay, regarding aware of sun, that. ISRO is going to launch a very important mission known as the Aditya L1 mission. Can you tell me the features of the mission and what would be the contribution for the coronal study? Sir, it is a mission that has been passed with the ambition to study the surroundings of the sun as a star. It also succeeds the mission that has been launched by the NASA, that is the Parker Solar Probe, which is also investigating the phenomena surrounding the sun. So in the Aditya L1, sir, I'm not exactly sure about the particular components, but the information which I collected, it is the study of the coronal ejections that has been impacting the atmospheric phenomena that is occurring on the Earth. What is L1 in this mission? Its full form is Lagrange L1, Lagrange's point number one. It is a place around the two celestial bodies where the force of gravity balances each other, and the object stays at that point. And how many Lagrangian points do we have in a system of two bodies? There, I think there are total five Lagrange points. Is moon in one of those Lagrangian points? So, sir, I am not quite sure, but it could be in the Lagrange point, but I am not sure. Okay, no issues. Tell me, how are these satellites sent into the space? What is the mechanism, and what is the actual technology used to take these satellites out to the outer space? I would start with the vehicles that are being there. The vehicles have the satellite has to put in the vehicle, and the vehicle must have that speed that we call as escape velocity, which is 11.2 kilometer per second. And further, by escaping the gravity pull of the Earth, the satellite has been put in the that orbit that is around the sun, and
So The vehicle has when you're using a vehicle that has to achieve this escape velocity to reach to the outer space, that we have to have we have to achieve a thrust for that. And yes, sir. what is the usage of propellant in that, and how is propellant different from fuel? Sir, answering the first question, sir, the propellant provides the thrust. It is because of the third of the Newton that every action has an opposite, equal and opposite reaction. And secondly, sir, I'm not exactly sure about the difference between propellant and the fuel, but I can make a guess if you allow. Yeah, please. Sir, propellant is a kind of fuel which provides the propulsion to the vehicle. I think so. uh, and how would you differentiate it from fuel? Sir, fuel is a substance which on burning gives heat and light, and propellant is a type of fuel which provides propulsion to the vehicle. Can you tell me, when we burn fuel in our vehicles on Earth, we just burn the fuel and then in the combustion chamber, and then we have the oxygen from the atmosphere that is used for the combustion. But we do not have such Yes, thing in outer space. There's a vacuum of space. We do not have the oxygen supply. How does the propellant burn in there? sir, I'm not exactly sure, but it is because of the oxygen that has already put in the in terms of the quantity that is So, desirable. what are the different types of propellants do we have? Sorry, sir, I'm not aware of that, but I will read about it. Okay. What is your mother tongue, Suraj? Sir, my mother tongue is Dogri. Dogri. Dogri is one of the five official languages of Jammu Kashmir. Can you give me the name of the other four official languages? Sir, the Hindi is one, Kashmiri is one, third is the Urdu, and lastly is English, I think. Mhm. Okay, give me a place where Dogri is used as a language and spoken as a language outside India. Sorry, sir, I am not aware, but it could be a dialect of Jammu and Kashmir that has been, and that could be using the Dogri. Okay, can you give me one specific feature that Dogri as a language has common with the other Pahari languages? One specific feature. Sir, I'm not exactly sure, but it could be the dialect that both Paharis and Pahari language and the Dogri language that could resemble. Because many times when we hear the Pahari, the dialect and the tone that is there, that could be the similarity between Dogri and Pahari. Okay, can you name any famous Dogri poet? Yes, we have Professor Ramnath Shastri ji, and Mhm. we have the that has contributed a lot to the for the Dogri, and thirdly would be the female Palma Sachdeva was there, who has contributed a lot. Can you tell me, is Dogri part of the eighth schedule? Yes, sir. Okay, which amendment added Dogri to be part of the eighth schedule? It was the 92nd Amendment of 2004 that has added Dogri. Can you name the other languages that were added to the eighth schedule with Dogri in that amendment? Yes, sir. But can I have a second, please? Yeah, sure. Yes, the three other languages are Bodo, Maithili, and Santhali. Very nice. Okay. Suraj, what is your birth date? Sir, I was born on 15th of December 1997. Any significant events that have happened on this date from Indian modern history? Sir, I'm not aware of the significant events that has happened on the 15th December 1997, but I am aware of the
event that has happened on the 15th December 1791. What was that? It was the Bill of Rights, the first amendment that has been passed in the US Constitution. No, I'm talking about the Indian modern history. Sir, as such, I am not aware of the 15th December, but in 1997 there was first time the electric vehicle was named Reva uh, was took a journey in the Karnataka state of Jammu and Kashmir. You are from Samba. Tell me the historical significance and the origin of this name, Samba, in your district. So, sir, Samba was historically known for the mandis, the 22 mandis which was established by the Raja State Singh in 1822. And regarding the name, sir, I'm not exactly sure, but the Samba was established in the 1400 AD by the younger son of the Rai Sadhu, that is named Maldev. And after that, Samba came in the Jammu presidency during the reign of Gulab Singh in 1816. And after that, it was totally annexed by the Gulab Singh 1846, Maharaja Gulab Singh. So before it was made a separate district, what was Samba? What were the districts Samba was part of? It was part of the Jammu as well as Kathua district. Or like, do we have any famous events, famous festivals or melas that are celebrated in your district? Yes, we have the Ratkada Mela which is celebrated in the Singh Temple of Gagwal, and it will be Mhm. coming days. So, what is the festival dedicated to? Which is the deity it is dedicated to? It is dedicated to the I think sir, I'm not totally sure, but it is dedicated to the Vishnu God. We also have this scheme of the government, one district, one product. And in that Yes, scheme, which is the product which has been selected for your district? it was the mushrooms which has been selected from my district. Do you know this person from your district, Allah Rakha Qureshi? Yes, sir, I have heard his name. Yes, sir. Who was he? Sir, I have heard his name, but right now I am unable to recall the exact uh, information regarding him. Okay, tell me, suppose I have to visit district Samba, which are the places that I would be interested in? Sir, regarding religious or any places. Any places that you feel that I might be interested in? Sir, regarding the two religious places that I will definitely recommend you to visit. First is the Baba Jamaliyal Khan is there, and Hmm. number two would be the Chichi Mata temple that has been there. Second, thirdly would be the wait a second, sir. Can I have a second more, please? Yeah, please, sure. Sir, the third destination would also be the religious place that is the Singh temple in the Garhwal. Which temple have you mentioned? Sir, Narsingh temple, Sri Narsingh temple in the Garhwal. Okay. Are you aware of this phrase that is used in your district, the city of sheets? Yes, sir. Please elaborate The on Samba that. district itself is called as the city of sheep. Why? Because it is and it was famous for the calico painting that has been done here using the vegetable dyes and by Mhm. printing by using the wooden blocks to print the sheets of from the cotton. Okay. I can see that you have taken chemistry as your optional. It is one of the subjects in your graduation as well. Okay. Just give me the difference between distillation and fractionation. What is the difference?
The distillation, it is a process that is being used for the separation of two liquids having different boiling points. Mm-hmm. And in terms of the fractionation that you have just mentioned, right now I'm unable to recall the exact definition, but it's also somewhat similar to distillation. Okay. Can you give me the chemical composition of fats in human body? The chemical composition, they are basically the carbohydrates that has been made from the three elements, namely carbon, hydrogen, and oxygen. We also have these elements that are arranged in a particular order in the periodic table. Why do we Yes, follow that particular order? Why are the elements arranged in a way that they are in the periodic table? sir. Firstly, the periodic table was invented just to ensure that the study of the particular element has been made simplified. And regarding the assembly of the elements in the periodic table, they have been assembled because of their similar properties. And in the groups, that 18 groups we have, they are basically the elements that show the almost similar properties uh, with their co-elements. Okay, we also have salt. When salt is added in the water, the boiling point of the water raises. What are the reasons for that? That process is called as the elevation in boiling point. The major reason is the vapor pressure of the particular solvent, that is the water in which we are adding the salt. It decreases, and it needs to be the vapor pressure of that solution to equal to the atmospheric pressure so that the liquid boils. Which is the element that is mostly found in the organic life? So it would be number one would be the oxygen that is more on this earth, and the second would be the carbon. Why is life carbon based? Why not silicon? Sir, both carbon and silicon belong to the same group, but carbon being the small element has more tendency to form to show catenation properties and to form long chain compounds, whereas the silicon on the other do not show the property of a catenation. Further, the carbon has a valency of 4 and it can react with majorly any element of the periodic table. Okay, generally, can you tell me the process that is used for the creation of energy in the nuclear reactors? Yes, sir. There are two types of processes that can be used. Firstly, would be the nuclear fusion reaction that can be done, and secondly would be is being used in the nuclear reactor. Has graphite any role to play in nuclear reactors? I'm not very sure, but if you know and make that. Do we have any fusion reactors in the world? Yes, sir. There are multiple fusion reactors. Not multiple, but the work has been going on recently. In the China and the US, the nuclear fusion reactors have produced the energy that is greater than their consumption level. That is the energy which they consumed while doing their reactions. It is more than that is being used during their reaction. That is, we have energy surplus reaction happened there. Which profession are you associated with? Sir, my father is a goldsmith. Okay. Gold foil is used as an engine in heat shielding for the function of heat shielding. Can you tell me why? Sir, it may be because of the density that the gold has and the resistance that it shows. It was also used for coating the James Webb Space Telescope for the mirror coating of this telescope. Are you aware of that? And what is the function of gold in that? Yeah, sorry, sir, I am not aware of that happening.
How is James Webb Space Telescope different from Hubble Space Telescope? Sir, it is basically because of the region in which the electromagnetic region that they were working. The Hubble telescope was working in the visible region also, but James Webb telescope that has been specifically working in the infrared region, so that to capture the energy that has been roaming in the space in the infrared region. Are there any metals that are yellowish in color? Are there any other metals beyond gold? Sir, I'm not exactly sure about it, but there are some metals that have a yellowish appearance. Is it edible? Is the gold edible? Yes, sir, we have that edible gold foils that are put on the streets in the street shops. Yes, so it is edible. You mentioned that your hobby is badminton, and what have you mentioned? Jogging. Who's your favorite badminton player? Yes, my favorite badminton player is Lakshya Singh. He's from Uttarakhand and he's a 2001 born. Any favorite women badminton players? I personally like the PV Sindhu ma'am for his aggression and the endurance that she shows on while playing the badminton. Can you name some Indian shuttlers? Yes, sir, definitely. Starting with the HS Prannoy, Kidambi Srikanth, and Lakshya Singh himself. And in the moment, we have PV Sindhu, we have Saina Nehwal. And these are the major shuttlers of India. You like to jog. Tell me how many kilometers do you generally jog? There, we have that particular road in my area where the straight length is around 2 kilometers, and I generally mm, move from one end of the road to the other end and then come back. So it is around 4.5 kilometers. You run 4.5 kilometers every day. Sir, 5 days a week. Okay. Tell me, how would your background in chemistry help us in administration? Sir, even I have been thinking about this for the last 1.5 years. That how can I use my chemistry knowledge in the administration? But I'm not very sure. But I will definitely contribute in the fields like if the government allow me to work in the field of fertilizers and agrochemicals, I can contribute my chemistry knowledge there. And further, while reading chemistry and while gaining that knowledge, I can also work in conditions where the issues like the team spirit and the team building is needed. So I can use that there also. We have mixed doubles in badminton. Yes, sir, we have mixed double in badminton. What are mixed doubles? The mixed doubles means the player, one male player and the one female player on both sides. Don't you think we should have mixed doubles in cricket as well? Yes, sir, it could be explored in future. What do you think would be the technical issues with that, and what would be the benefits of that? Firstly, I will tell about the benefits that we have. It will increase the competition level between the girls and the boys, and it will in the future will lead to improve in the performance of the players. And but the technical issue would be the competition because the physical standard of the males and females are a little bit not equal. But and if we put the female and male in equal side, both sides, then the performance may get impacted because if a male player is batting and the female bowler is bowling at a lower pace, then the chances of getting runs would be high. So that could be the reason. Think women do not make good cricketers? No, sir, I'm not saying that they are Because not doing good cricketers. cricket is a game where you require physical strength. You just mentioned that
there is a difference in the physical strength between males and females, and but natural that would hamper their performance. Sorry, sir, I didn't get that question. The question is, you just mentioned that there is a lack of strength. There is a little bit difference between the strength levels of males and females, and cricket is a game where you require a good physical strength. By that logic, women should not be good cricketers. No, sir, I doesn't mean to say that. But I'm saying in the comparison between if boys and girls have been compared, there is some labs are there that women, but the women are doing quite good in the cricket as well. Who's your favorite woman cricketer? Recently, Smriti Mandana is doing great. Suraj, tell me, if you had to clone somebody, anyone of your, who's a favorite character or personality that you want to clone, who would that be and why? Sir, as such, I have not thought about that, but if you give me few seconds, I can think about that. Yeah, sure, please. Yes, sir. Sir, I would like to clone myself with the B.R. Ambedkar, sir. I am very impressed by and inspired by the struggle that he had faced during his young years, and finally become the drafting chairman of our drafting committee and wrote such a beautiful constitution for our India. So I would like to be clone of him. Why not Gandhi? Why not Mahatma Gandhi? He's the father of the nation. Yes, sir. Sir, I was talking about the particular context that suits me as well because I have been from a rural background. I have that same um, connection with the B.R. Ambedkar, but Mahatma Gandhi is our father of the nation, and I have great respect for them. If P.R. Ambedkar Saab comes into the interview process just like you, and he has applied for the JKPSC civil service examination, uh, and you are among one of the interview panelists, will you select him? Sir, it would depend upon the performance of the B.R. Ambedkar sir on that day. But if they if they sir, can I speak in Hindi if you allow? Please. सर अगर वो इंटरव्यू बोर्ड के जो बेंच मार्क रखा हुआ है उसको क्रॉस कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली ही विल गेट सिलेक्टेड बट इफ ही इज नॉट क्रॉसिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको इट वुड बी ए जॉइंट डिसीजन बाय द बोर्ड तो आई थिंक अगर कर रहे हैं तो ले लेंगे अगर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा उनको क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सिलेक्ट होंगे? सर मुझे यकीन है कि सर हो जाएंगे वो अगर उस तरह का बैकग्राउंड उनका है तो हो जाएंगे किस बेसिस पे आपको लग रहा है ऐसा कि वो सिलेक्ट होंगे? सर उनकी पर्सनैलिटी वैसी है जिस तरह मैंने उनको जैसे अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है तो मुझे लगता है कि सर वो हो जाएंगे बिकॉज वो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है उनकी पर्सनैलिटी में वैसा दिखता भी है जो वीडियोज मैंने यूट्यूब पे देखे हैं तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है वो हो जाएंगे सूरज, अपने बारे में मुझे बताइए कि आपकी सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है जिंदगी में? सर अभी तक तो रिग्रेट लास्ट 4 ईयर्स में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जो ये बिना गाइडेंस के यूपीएससी के अटेम्प्ट दे दिया वो मेरे लिए रिग्रेट था बिकॉज अभी मैंने 4 अटेम्प्ट अपने मेरे हो गए हैं और बिना गाइडेंस को उसको नहीं दे पहले गाइडेंस ले लेनी चाहिए और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज बदलना चाहो तो वो कौन सी चीज होगी? सर मुझे लगता है कि जहाँ तक भी अभी मैं पहुंचा हूँ जैसे पहुंचा हूँ वो ठीक है उसी हिसाब से ठीक था कुछ बदलने की जरूरत है नहीं
क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं? यस सर, मैं So why मेरे should में मेन why should JKPSC select you as a KS officer? सर, फर्स्टली आई condition that has been there for the JKPSC civil servant. And secondly, I have that quality that a civil servant should have. I have hardworking nature. I have determination. I have that courage of conviction. And most importantly, I have that compassion for the society. I really want to serve the people that are being deprived or they have not been touched by the services of the government assets. And I want to contribute in that as well. You mentioned that you possess the qualities, you have the compassion, you have the compassion to serve the people. Are you assuming that the other candidates along with you that have come for the same job do not have that passion or do not want to serve the people? No, sir, I'm not assuming anything. Even they have that same feeling for the job as well as for the people. But So, if hmm. I'm at par with them, yes, sir. Please continue. And if and the board finds that the candidates which are being present in front of them, they are more mature and more intelligent and more deserving than me, then the board has the right to choose them. But next year I will be coming back again with more improvements and with more hard work and then get selected in the board. Mentioned that it took you some time, and you also have been. Have you been teaching any of these years? Yes, sir. I'm giving tuition to the 11th and 12th class students. And you must be teaching chemistry. Is that right? Yes, sir. Do you know the concept of seasonal teachers in Jammu Kashmir? Sir, I'm not very sure, but if you allow, I can make a guess. Yeah, sure. Sir, seasonal teachers could be the teachers that has been teaching, that have been doing job of teacher on the basis of seasons, or in the college we have uh, the terms like contractual teachers, and that could be the part of the seasonal teachers. Recently, the government, central government, had this Har Ghar Tiranga campaign, wherein you have to showcase the love towards your national flag and all that. There was this controversy regarding the teachers in the Kashmir Valley precisely, who have made this point that they were being forced in this Har Ghar Tiranga campaign. What do you think about this issue? Sir, I'm not exactly sure about the issue, but I can say that the government wants to improve and add the values like integrity towards the nation and the patriotism that one should show towards the nation. And this is the government plan to in order to harness the values like the tolerance and the positivity and fraternity in the society. But if the teachers are saying that they have been forced, so I think the forcement of a particular decision should not be there. If one is patriotic about his nation, then by flying the tiranga should not be the only standard that one should fulfill. One can be patriotic by his heart and by his actions as well. All right. So let's conclude the session. Uh, I have got your feedback ready. तो कैसा लग रहा है आपको? Sir, thank you. How how was the interview? सर अच्छा था सर, अभी मैं कल भी गया था देने सर एक जगह पर, उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट कर दिया बहुत सारा, तो फिर अभी तो मैं वैसे ही बैठ गया था आपके पास. नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छा ऑरा है आपका. नॉलेज की बेस भी काफी स्ट्रांग है आपकी. सवालों से तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर कोई फैक्चुअल सवाल पूछ रहा है तो उसमें अगर नहीं आ रहा आपको तो डज नॉट मैटर, उतना उसमें कोई इशू नहीं. पर सिचुएशनल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से संभाला आपने. और मोस्टली जो मैंने सिचुएशन क्वेश्चंस अभी तक बच्चों को पूछे हैं, यू हैड वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स. तो हम एक एक Thank you. करके गो थ्रू इट. जैसे कि वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने पहले अपना नाम, फिर विलेज, फिर स्कूलिंग, फिर अपनी ग्रेजुएशन,
फिर आपने बोला कि 18 में आपकी ग्रेजुएशन पास आउट हुई, उसके बाद यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएससी एग्जामिनेशन। तो अब जेकेपीएससी ही मेंशन कर रहा, थोड़ा लगेगा कि नहीं ही रियली वांट्स टू बिकम अ केएस ऑफिसर। उसके बाद आपने बोला कि यू लाइक, आपने भी हॉबी और इंटरेस्ट बता दी। सो इंट्रोडक्शन आपका सॉलिड है, इट इज फन। उसके बाद मैंने आपको कहा व्हाई वर यू नॉट सिलेक्टेड। अगर आप 4 साल से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपने अच्छा कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, कोचिंग नहीं कर पाए, गाइडेंस नहीं की, तो ठीक है। वाई सिविल सर्विसेज ओनली, आपने बोला डाइवर्स प्लेटफॉर्म है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और यू सर्व द पीपल। ये जो सर्व वाला पीपल वाला पॉइंट है, इसको बिल्कुल लास्ट पे बोलना है, ठीक है। डोंट स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट, लगेगा कि थोड़ा ये बना रहा है ये बात। तो ऐसा लगना चाहिए आप इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज डाइवर्स प्लेटफॉर्म में काफी मजा आएगा काम करने में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी साथ में है इसके, और फिर जाके यू वांट टू सर्व द पीपल इन कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और अगर हो सके यू ऑल्सो एड एन इंस्पिरेशनल स्टोरी अटैच टू इट, जहां पर यू कोट सम इंसिडेंट कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था, आपने देखा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, क्या वो ट्रिगर हुआ आपकी जिंदगी में, उसने क्या काम किया था, उसके बाद से आपको लगा दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है ना। एंड नेवर नेवर एवर टॉक बैड अबाउट योर ओन सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा था, नेवर एवर टॉक बैड अबाउट द वर्क दैट यू हैव डन, ऑलवेज टॉक गुड थिंग्स अबाउट इट, कि वो भी ठीक है, केमिस्ट्री में मैं आगे जा सकता था, वहां पर मैं एपी वगैरह के लिए पढ़ सकता था, मगर मुझे लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यू शुड टॉक ऑलवेज गुड अबाउट योर बैकग्राउंड। उसके बाद क्योंकि अपना नाम है सूरज, सूरज से काफी सारी चीजें फिर लिंक हो सकती है, तो मैंने कोशिश तो किया कि अलग अलग चीजों से आपको सवाल पूछूं। 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं सन से यहाँ लाइट आने में, और फिर मून से यहाँ लाइट आने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। लाइट क्या है, लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और आदित्य L1 का, फिर आपने पार्कर सोलर प्रोब कहा, आपको अच्छा आइडिया था उसका। फिर मैं बार बार आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं देखूं कि हाउ वुड यू टेक माय इंटरप्शन, तो आपने इंटरप्शन को अच्छे से लिया। इफ दे इंटरप्ट यू, जस्ट लेट देम इंटरप्ट यू। प्रोपेलेंट और फ्यूल का फर्क यही है कि प्रोपेलेंट में फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर होता है, बिकॉज स्पेस में आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। सो दैट इज प्रोपेलेंट। और बार बार आप कह रहे थे जहां आपको नहीं पता था, कैन आई मेक अ गेस इफ यू अलाउ मी टू मेक अ गेस। ये बहुत अच्छी चीज है आपकी। वाई? बिकॉज अगर फिर आप गलत भी बोल देते हो तो वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सीधा ही गलत जवाब दे दोगे तो लगेगा कि झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। सो दैट शुड नॉट हैपन। इफ यू डोंट नो इट, यू कैन कंटिन्यूअसली कीप ऑन सेइंग सर कैन आई मेक अ गेस। उसके बाद मदर टंग डोगरा के बारे में, इट इज द पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान की है, उसकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है पाकिस्तान में, वहां पर भी डोगरी बोली जाती है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद यू हैड नॉलेज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। अच्छा है आपका। 15 दिसंबर में इट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल आई गेस, जिनकी डेथ हुई थी आपके बर्थडे पर, तो वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से माइट बी आस्क्ड। उसके बाद आपको सांबा के बारे में वेरी गुड नॉलेज। जो मुझे अच्छा लगा जब मैंने आपको कहा कि पीवी सिंधु के बारे में आपको अच्छा क्या लगता है, तो नेवर गो दिस वे जहां पर आप बोलोगे उसका स्किल सेट अच्छा है या वो टैलेंटेड है या वो सब, पर जो आपने चीजें बोली वो काफी अच्छा था। दैट इज एंड्योरेंस, कि आपको उसकी एंड्योरेंस पसंद आई। और अग्रेशन, अग्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, यू कैन से डेडिकेशन, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें दैट वी वांट टू इन अ सिविल सर्वेंट ऑफिसर। तो जो ऑफिसर वाले ऑफिसर्स हैं उनमें जो चीजें क्वालिटीज होनी चाहिए, वही क्वालिटीज आपको बोलनी है कि ये बैडमिंटन प्लेयर में ऐसी ऐसी क्वालिटी है और ये मुझे अच्छी लगती है, तो इससे लगेगा कि नहीं एक सिविल सर्वेंट अच्छा बन सकता है ये। देन वी टॉक्ड अबाउट योर केमिस्ट्री की नॉलेज, वेरी गुड नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री एज वेल। गोल्ड की नॉलेज, क्योंकि आप अगर उनको उस पर नजर पड़ी गोल्ड स्मिथ वाले पे, तो मे बी वहां से सवाल आ सके। डिसेंट नॉलेज है आपकी, मुझे अच्छा लगा। हाँ, जो मुझे ठीक नहीं लगा वो ये है कि आपको जब मैंने पूछा कि केमिस्ट्री का क्या, आपके बैकग्राउंड का क्या रोल हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यू डोंट हैव टू से कि मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि क्या रोल बन सकता है इसका और मुझे नहीं मिल रहा है इसका रोल। कुछ ना कुछ तो है ही। जैसे आप बता सकते थे कि सर इसमें पेशेंस हमें रखना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी है वो तो सबसे बड़ा है कि आपको लेबोरेटरी में गो फॉर द प्रैक्टिकल, जो आप काम करते हैं उसमें। सो आपके अंदर वो लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है, जहां पर आपको पता है कि दो चीजों को मिलाकर आप तीसरी चीज बना सकते हो, ठीक है ना। सो बिल्कुल ऐसे ही आप रिसोर्सेज को, अलग अलग रिसोर्सेज को मिलाकर एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। तो उस तरीके से
गो द फिलोसॉफिकल एंगल, उस तरीके से आप वो यस मेंशन सर। कर सकते हो। तो सर ये अच्छा ठीक है। लगा मेरे को, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था। ये आप बता सकते हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और आप ये, जैसे मैंने आपको एक बिल्कुल क्रेजी सा आइडिया बता दिया कि क्या हमें मिक्स डबल्स रखने चाहिए क्रिकेट में भी। तो जो भी ऐसे क्रेजी आइडियाज होते हैं ना, जो आपको बिल्कुल अजीब सा लगेगा, तो उसमें यही आपका अप्रोच जो आपका था, दैट इज द अप्रोच यू शुड हैव, कि डोंट डोंट से नो टू क्रेजी आइडियाज। जैसे आपने बोला कि सर हाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज को, तो क्या लग रहा है इससे कि अकोमोडेटिव है बंदा, कि नई नई चीजें सोच सकता है, सोचने वाला है, अकोमोडेटिव है। तो नेवर से नो टू क्रेजी आइडियाज। हाँ, अगर कोई सिरे से ही कोई गलत बात बोल दे रहा है, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं है, तो ऐसी चीज को, ये तो ज्यादा ही क्रेजी है, इसको तो आपको डिनाई करना है। बट जो ऐसी ऐसी छोटी छोटी लाइट हार्टेड चीजें हैं, यू डोंट हैव टू से नो। उसके बाद आपने अंबेडकर साहब का बोला कि आप उनको क्लोन करेंगे, वेरी गुड। मैंने आपको बोला क्या आपको सिलेक्ट किया जाए, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, विल यू सिलेक्ट हिम, आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, वेरी गुड, दैट इज द आंसर। फिर मैंने कहा क्या वो सिलेक्ट होंगे, तो आपने कहा हाँ होंगे, वो भी बहुत अच्छा आंसर है। जो वहां आपको नहीं करना चाहिए था वो था कि आपने इंग्लिश से हिंदी शिफ्ट कर लिया। नेवर डू दैट बिफोर द पैनल। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप हिंदी में जवाब दोगे, अगर वो इंग्लिश पूछ रहे हैं आपको इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है ना? कुछ भी करके ठीक डोंट है। शिफ्ट लैंग्वेज, डोंट चेंज योर लैंग्वेज, खुद से लैंग्वेज नहीं बदलना। अगर वो बदल रहे हैं उनको बदलने दो, ठीक है? और वैसा होगा। परमिशन लेके कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत मांगो परमिशन, आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप क्यों हिंदी में जाओगे? सर मैं एक बात बताऊंगा सर, कल मैं गया था सर वो देने, आपको बताया भी पहले, वहां पे मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, पर मेरा आंसर खत्म होने से पहले वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मेरा मोरल डाउन कर दिया उन्होंने, 10-12 मिनट में कह दिया कि भाई तेरा तेरा मुश्किल ही है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे को तो बहुत तगड़ी नॉलेज लगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो और वो इंग्लिश इंग्लिश में जवाब देना, आपको जो पैनल दिखेगा, आप किसी से भी आप किसी किसी की ट्रांसक्रिप्ट ले लो, बहुत ही सीरीन सा माहौल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बम्बार्ड कर देंगे। हाँ, कोई एक ऐसा पैनलिस्ट होता है जो ये देखना चाहेगा कि आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैसा है, कि जब मैं इसको 5-6 सवाल बैक टू बैक यस सर। पूछूंगा तो ये घबरा तो नहीं जाएगा, नर्वस तो नहीं हो जाएगा, ब्लैकआउट तो नहीं होगा। तो वो उसी के लिए रखा होता है उन्होंने। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप 5 सवाल को भी बोल दो सर अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं नजर दे दूंगा इसमें, कोई बात नहीं, इसमें क्या है? आप उसी को उल्टा 500 सवाल पूछोगे, उसको थोड़ी ना आ जाएगा सारे सवालों का जवाब। तो ये सवालों को यस अगर बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको नहीं पता, आप बोलोगे कि आई डोंट नो राइट नाउ, तो आप बता सर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपने कितने सारे सवालों का बोला कि सर आई डू नॉट नो, लेकिन वो चीज मुझे याद नहीं रही। लेकिन अगर आप गलत जवाब दे दोगे, वो याद रह जाती है। आपने मुझे पूछा सर मैं लैंग्वेज वो चेंज याद करूं क्यों? रहेगा, यस डेफिनेटली। हाँ हाँ, आपने बोला सर मैं लैंग्वेज चेंज करूं, ये मुझे याद रह गया। भाई क्यों लैंग्वेज चेंज करोगे आप? आपका तो इंग्लिश मीडियम लिखा है आपने, तो आपका और अच्छी इंग्लिश करते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मोस्टली वो खुद से कर लेते हैं, लाइक पैनलिस्ट, जितना मैंने सुनने में आया कि पैनलिस्ट खुद ही लैंग्वेज चेंज कर लेता है, वो आपको हिंदी में ही पूछ लेगा, तो आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगा फिर। ओके। यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपका कोई रिग्रेट है, आपने यूपीएससी का वो एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने कहा कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहोगे। आपने कहा कि सर जो भी है ठीक है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, वो ठीक है, मगर इसमें ह्यूमिलिटी भी दिखनी चाहिए। तो आप ऐसे बता सकते थे कि सर मैं ये चाहता कि मेरा, जैसे ये आपका पहला इंटरव्यू है, यस सर, मेरा फर्स्ट है। मेंस कितने लिखे आपने? सर जेकेपीएससी का एक ही लिखा है। यूपीएससी का लिखा है कोई मेंस? यूपीएससी का मेंस लिखा नहीं सर, गाइडेंस ही नहीं दी तो फिर क्या करना था। हम्म। आप ये बता सकते थे कि सर मैं ये चेंज करना चाहता कि मैं पहली अटेम्प्ट में के ऑफिसर बनना चाहता था या केएस बनना चाहता था, कोई ऐसी रिलेटेड टू स्टडीज या ऐसी कुछ चीज, लाइट हार्टेड चीज। तो उसमें कॉन्फिडेंस भी दिखेगा और ह्यूमिलिटी भी दिखेगी। फिर मैंने आपको कहा व्हाई शुड बी सिलेक्टिव, तो यू गॉट इनटू मुझ में ये है, ये क्वालिटी है, ऐसा ऐसा चीज है, डोंट गो दिस रूट। सबसे पहले ना यू हैव टू शो योर लॉजिक कि सर ऐसा भी है कि सम बिकॉज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सच कि सारे लोग तो सिलेक्ट नहीं होंगे, बट नेचुरल सम पीपल विल बी लेफ्ट आउट। तो लॉजिक दिख रहा है कि हाँ भाई इसको समझदार है, कि इसको पता है कि सिलेक्ट नहीं भी हो सकता हूँ। साथ में ये भी मोरालिटी भी दिखानी है कि सर आई आई नो दैट माय फेलो कलीग्स दे हैव आल्सो वर्कड हार्ड,
So I would want the recruitment process to be fair to everybody and may the best person be selected for the job. तो आपने मोरालिटी दिखा दी, फिर अपने आप को या फिर सेल योरसेल्फ कैसे? सर, सिंस आई डोंट नो माय कॉम्पिटिटर्स, व्हाट आई डू नो इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिविल क्वालिटीज इन अ सिविल सर्विस ऑफिसर, एंड आई, एज फार एज आई नो माई सेल्फ, आई पोजेस एम्पैथी एंड कंपैशन एंड डेडिकेशन, जो भी एथिक्स में पढ़ा है आपने, वो चीज लगा देना है। ठीक है, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप अच्छे कैंडिडेट है। अगर आपका मेंस अच्छा हुआ है, आपका इंटरव्यू भी सही होगा इंशाल्लाह। तो लेट्स सर होप। अच्छा हुआ मेन, जी, सर मेन अच्छा हुआ है। बस तो ठीक है फिर। मुझे लगता है आपको लिस्ट में देखेंगे हम, होपफुली। थैंक यू सर। सर एक सेकंड, एक बात है सर, मेरा ब्रदर सर कल से वो ना वो भी डीमोटिवेट हो गया जब से मैं देख के आया हूँ ना इंटरव्यू, तो उसको भी लग रहा है कि ये इसका काम हो गया, तो उससे आप 1 मिनट कह दोगे कि ये ठीक है बंदा मेरी तरफ से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप? बढ़िया सर, आप बताओ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इनका इंटरव्यू दिया, मैंने हर एक चीज को टच किया, मैंने इनकी मद अप्रोच था, और कॉन्फिडेंस से अच्छे आंसर निकल आते हैं। फिर अगर कोई फैक्चुअल सवाल पूछ रहा है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, उसमें वो 5 बार भी बोल दें, लगा कि इनका अगर मेंस अच्छा हुआ है, अगर मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में निकल जाएंगे। बस मेंस अगर तगड़ा हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं। हाँ, तो और इनको अभी डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करने की जरूरत है, आपको इनको उठाने की जरूरत है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, नॉलेज अच्छी है इनकी, तो मुझे जितना लगा इनका बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, अच्छी पर्सनालिटी की वाइब आती है, तो वो एक अच्छा छाप छोड़ता है। अगर कुछ नहीं आता इनको तो इतने डिफिकल्ट ऑप्शनल में कैसे क्वालिफाई कर लिया इन्होंने? तो ये बकवास बातें हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना है। इनका मेंस क्वालिफाई हुआ है, इतने साल से पढ़ रहे हैं, ये अच्छी नॉलेज है, हर एक चीज की अच्छी खासी नॉलेज है, तो ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, जस्ट सपोर्ट हिम राइट नाउ। अच्छा कॉन्फिडेंस दो इनको। और मैं फिर से आपको सूरज बता रहा हूँ, 10 चीजों में बोलो कि मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत जवाब नहीं देना। और वहां पर जो भी आप बोलोगे, इट हैज टू बी ऑनेस्ट, जैसी आपकी पर्सनालिटी है वो पुट थ्रू करना उनको। ठीक है ना? होपफुली आप सिलेक्ट होंगे, फिर एक और बात करेंगे आपसे। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल से डर गया था तो मैंने कहा कि आपसे बात करवा नहीं, सपोर्ट भी, सपोर्ट की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है सर, थैंक यू सर, टेक केयर।